What is self love? Self love is respecting yourself, अपने आप की इज्जत करना. Also taking care of yourself, not just physically but spiritually, in a way that will make you peaceful, happy, know about you, doing a lot of inner work for yourself, gifting that time for yourself. That is self love. Respecting yourself even in your language. Now self care आप बहुत जल्दी अपने आप के लिए डेवलप कर सकते हो. ठीक है कि मैं अभी मसाज के लिए जाऊंगी, स्पा के लिए जाऊंगी, वो सब तो आप जल्दी लर्न कर सकते हो. बट जो सेल्फ लव है ना, इट कैन टेक years to imbibe it in yourself. It can take decades. But I really hope and pray कि all those who are watching, हम लोग सब जितना जल्दी हो सके वो अपने लाइफ में बिल्ड करें, उसको एक्सपीरियंस करें. ठीक है. सो सेल्फ लव, लाइक आई सेड, इज अ डेली एक्टिविटी. रोज करना चाहिए जिसमें आप यू आर चेकिंग इन विद योर सेल्फ and loving and respecting yourself just like the way you love and respect others. Okay, so it's very important that you do that. I'm talking to you about what self love is not. Self love is not like काफ़ी लोग आजकल समझने लगे कि self love is self indulgence. अपने आप को ट्रीट करो, खाना खाओ, ब्यूटी पार्लर जाओ, ये करो वो करो, अपना फेवरेट हॉबी खेलो. ठीक है, वो सब ठीक है, फाइन. बट सेल्फ लव एक अलग लेवल का होता है. It will take a lot of time for you to really build that in yourself. आपको पता है मैंने कितना कुछ अभी ट्रेन किया अपने आप को, बट फिर भी अभी भी मेरा जो ब्रेन इस वे में वायर्ड है कि मैं बोलती हूँ ओ माय गॉड मैं इतनी मोटी लग रही हूँ. बट यू वोंट बिलीव, कुछ टाइम पहले, अभी कुछ महीनों पहले मैंने डिसाइड कर लिया मैं वही कपड़े पहनूंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. मेरा टमी बड़ा है, इट्स बड़ा है मेरे लिए. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. बट क्योंकि ये हैबिट चेंज होने में काफ़ी टाइम लगेगा, what happens is it comes out from my mouth. I'm looking fat, I'm looking plump. और जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ, my husband says that I thought you loved yourself. Then I say no. When I say it only to you, you have to just listen and remind me because you're my person, right? But I ensure I don't say it in front of everybody. That is the time I really feel self-love. But when you're so used to talking to your close friends, family, siblings like that, because they're all known faces, it takes some time to get rid of it. ओके. अच्छा, तो अब ये जो सेल्फ लव कैसे हम अपने आप में इम्बाइब कर सकते हैं. सेल्फ लव इज अ ह्यूज टॉपिक. देर आर लॉट्स ऑफ रिसर्चेस, स्टडीज, एंड देर आर सो मेनी वेज यू कैन लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ. बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर 3 but very important points that will help you to practice self love. ओके. सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को कंपैरिजन से बचाओ. ठीक है. हमेशा जो हमारे लाइफ में हमें वो नेगेटिविटी आती है और अपने आप पे डाउट आता है, वो इसीलिए है क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं. राइट फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न, माई सिस्टर यूज्ड टू स्टडी इवन मोर बेटर देन आई यूज्ड टू स्टडी इन स्कूल. तो ऑटोमेटिकली ओ मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ. जबकि हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं फैमिली में, बट फिर भी वो थॉट आ जाता है. फिर किसी ने किसी को ब्यूटीफुल कह दिया, देन यू फील कि ओ माय गॉड दैट मींस आई एम नॉट प्रिटी. अभी दुनिया ने ये डिफाइन कर दिया है कि सिर्फ स्लिम लोग बहुत सुंदर होते हैं, तो मैं अपने आप को कंपेयर करूँगी स्लिम लोगों से. अभी तो हालांकि ये सब काफ़ी चेंज हो रहा है. रियली नाउडेज देयर आर मॉडल्स हु आर प्लस साइज एंड एवरीथिंग इज रिस्पेक्टेड दीज डेज, व्हिच इज गुड. द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग. But I'm saying somewhere we also need to progress internally, right? Now we keep thinking that, oh, I'm not as beautiful. So first thing is to stop comparing. Again, I won't say that you can completely stop, but you can control it and learn how to eventually overcome it. Now, how can you stop comparing yourself? हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. ये थॉट्स बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है जब हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं. और इसका नंबर 1 रीज़न स्पेशली आज के ज़माने में है सोशल मीडिया. आपको लगेगा कि ये बहुत सिंपल टिप है, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल टिप है. अपना सोशल मीडिया का टाइम लिमिट कीजिए. पता है, एज ह्यूमन बीइंग्स वर इवॉल्विंग एंड इन दोज डेज आवर ह्यूमन ब्रेन्स आर नॉट डिजाइन्ड टू टेक सो मच ऑफ screen time, so much of light. But now there is so much going on, our brain is not able to process that. So the only way to do this is keep a timing for social media. If your job demands it, fine, you again need to create boundaries because your health end of the day is most important, nothing else. Okay. और सोशल मीडिया पे अगर आपको न्यूज़ जानना है वो सब भी ठीक है, बट आजकल ये रील्स देख के
फेसबुक देख के हम लोग कंपेयर करने लगते हैं, अरे वो उस हॉलीडे पे चला गया, वेकेशन पे चला गया, वाह उसकी ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे को देखो मैं तो ऐसी हूँ। देन या तो फिर आप बोलोगे कि ओ यार ये लड़के या लड़की ने क्या वेट लॉस किया है, कितनी लकी है। अरे यू डोंट नो दैट पर्सन्स जर्नी, वी डोंट नो हाउ मच ही और शी वुड हैव गॉन थ्रू, प्रॉबेबली दैट पर्सन वुड हैव नॉट बीन वेल, बट हम अपना माइंड बना लेंगे कि वो इतनी लकी है, ये इतना लकी है। तो ये सोशल मीडिया जो है आप सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट कीजिए अपने नोटबुक में, प्लीज राइट इट डाउन। आई विल लिमिट सोशल मीडिया यूज and I'm going to use social media only for 30 minutes a day, 1 hour a day. Like for me, social media is important क्योंकि मैं अपना जो branding और workshops के advertisements run करना चाहती हूँ, तो I will have to be on social media. But पहले मैं भी ना बस बैठ के reels देखती थी और सोच रही I'm going to talk, अरे भाई reels का क्या फ़ायदा, यहाँ पे लोगों को मुझे difference create करना है, virtual world में कौन देखेगा, हमारे जैसे कितने लोग हैं। तो I started stepping out and actually taking up projects which are out of social media and only digital. Okay. So ensure you limit your social media. The next and very important, so this is a small part of comparison. Like I said, it's a huge topic. Maybe if you'd like to attend my courses, I really dissect all of this and talk to you, so you can go ahead and see the details. The second and the most important, और वो है कि setting boundaries. Setting boundaries is not only at work or with your friends, but even with your kids, your parents, your children, grandchildren or grandparents. Sometimes that can also be toxic. So really identify कि आपके अराउंड ऐसे कौन से लोग हैं जो जानबूझ के शायद आपका टाइम नहीं डिमांड कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि वो लोग बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें नहीं समझाया कि आपके बाउंड्रीज क्या है। So today I want you to sit down and in your notebook write down कौन ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है आपके बाउंड्रीज को वायोलेट करते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। यू विल हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ, यू नो, डू यू रियली थिंक यू आर बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इन कम्युनिकेशन? नो। सो यू नीड टू इंश्योर कि आप लिखो हाउ इज इट दैट यू आर गोइंग टू बी सेटिंग बाउंड्रीज, व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन। ओके, इट कुड बी एज सिंपल एज समटाइम्स आप ना नहीं बोल सकते, किसी ने आपको स्वीट दे दिया तो आपको शायद वो स्वीट या खाना डिश बिल्कुल पसंद नहीं, बट जस्ट बिकॉज कोई आपसे प्यार करता है, आप जानते नहीं हो हाउ टू से नो एंड यू जस्ट स्टफ इट इन योर बॉडी इवन दो यू डोंट लाइक इट। व्हाई डू दैट? इंस्टेड प्रैक्टिस, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल कि मैं क्या बोल सकती हूँ जिससे द अदर पर्सन डजंट फील हर्ट एंड आई एम ऑल्सो फाइन। Like so sweet of you, but trust me, if you love me, you'll understand I am too full, I don't want to start vomiting. You know, dialogues like this, practice it in front of the mirror because you have to teach others how to treat you. The final tip and a very very important tip is to change your negative mindset. अब पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स इग्नोर करके पॉजिटिव रहो। यू नो, हम लोग क्या गलती करते हैं, हमारा जो लॉजिकल माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, उसके साथ तो हम बोलते रहते हैं पॉजिटिव स्टफ, बट आपको ये पता होगा कि देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड विच इज एन इलॉजिकल माइंड एंड वॉट एवर यू फीड इट, it automatically starts processing it. So you have to do a lot of inner work to talk to that part of your mind. And जब आपका subconscious mind work करने लगता है, automatically it has an effect on your conscious mind, your actions, your life. So you really need to make friends with that subconscious mind and start training that part of your brain. You know, start having a positive talk with that part of your brain. That is important. So that is what I mean by saying ki change your negative mindset. And one of the ways that I personally use is a positive self-talk. So मैंने, you know, I believe a lot in prayers. I sometimes feel if I really close my eyes and listen to God, I do feel in some way or the other He speaks to me. And I'm sure all of you do have some power within you, right? And you also listen to some power within. तो काफ़ी प्रे करने के बाद देन आई रिकॉर्डेड माई ओन वॉइस एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस सेल्फ टॉक गाइडेड विजुअलाइजेशन. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. इट हैज़ रियली created a huge impact in my life and it continues to do so. You can go register yourself on Graphy. I'll share the link below, and that is where there are a lot of resources which are free as well, and one of them is this guided meditation, okay, guided visualization. So please practice it and ensure that you do it every day in the morning, and in case you are comfortable with it after a while, definitely record your own voice and listen to yourself talking to yourself.
Okay, it will take a while. For me, it did before I started listening to my own voice, because I had to be confident about my voice, about self-love. Then only मैं सुनूंगी ना अपने आप की बातों को. तो ensure that you first get comfortable and then you start doing things for yourself. I would like to end by saying that I'm not a savior. I'm not here to save you. I'm just here to uplift you and enable you to be your own happiness coach, to be your own self-love coach. Okay? I really hope you enjoyed this conversation. Do take care of yourselves and keep coming back for such interesting tools and happy experiences in my life, so that you get inspired too to have a positive and a happy lifestyle. Bye.